आज जब सनी देओल वापस आए हैं, उन्होंने चौका नहीं मारा, उन्होंने सीधा छक्का मारा और बाउंड्री के बाहर बॉल फेंक दिया है. I watched Oh My God Part 2 on Monday, 5 days before the release, with the cast and crew of the film. In fact, after the ending, and I told Akshay, इसको adult certificate क्यों दिया? I said, but एक गलती है. She said, what? I said, आप एक बहुत बड़े तूफान के सामने आ रहे हैं. एक फ्राइडे ही काफी है किसी फिल्म को या किसी एक्टर को वापस उस रेस में लेके आने के लिए. आपको फिल्म पसंद नहीं आई, नो प्रॉब्लम, लिखिए, नेगेटिव है, क्रिटिसाइज करिए. इट्स योर जॉब टू क्रिटिसाइज अ फिल्म और लाइक अ फिल्म और व्हाटएवर. पर उसका मजाक बनाना, उस पे बफूनरी करना, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. पर्सनल अटैक नहीं होना. पर्सनल अटैक मत करिए. डोंट हिट बिलो द बेल्ट. हाय, दिस इज तरन आदर्श एंड वॉच दिस एंटायर इंटरव्यू only on Bollywood Hungama with the best Rohit Khilnani. And welcome to Bollywood Hungama. This time we have come at a good time, I suppose. Yes, yes. Many times we have been talking how the industry is on ventilator and it's in ICU. But today, please tell me, are we in a better position? Yes, we are out of the hospital. We are enjoying the sunshine. We are enjoying the monsoons, of course. Achhe din. We are back to Achhe din, I would say. I hope it lasts for a long time, because the month of, in fact, the last week of July onwards, from Rocky Rani to right now, Dream Girl 2, it's been an uninterrupted run of successes. Right. So, well, it's been a great phase, and I think, I hope this phase continues with Jawan now, which is supposed to release on the 7th of September. Right. So we are Gadar is on its 18-19 day at 450. Yes. Rocky Rani has crossed 150. Oh My God 2 also will 125 cross. Has crossed. Yeah, should aim for 150. Yes. And Dream Girl 2 has crossed 50 in 4 days. You can say that. No, it's going to cross on the 5th day. Tuesday by Tuesday it will half cross century. 50. Yes. So we are actually talking about great numbers for multiple films here. Yes. And actually, a phase like this used to exist in the 70s and 80s. But and I used to always think, when will we go back to that phase? You know, when Amitabh Bachchan used to have so many films, and Dharmendra and Shashi Kapoor and Shatrughan Sinha, Vinod Khanna, one release after the another, week after week, and they used to be houseful board every. सब चल जाती थी. And a majority of films used to, I mean, majority of them, as you know, were multi-starrers. And हम यही सोचते थे कि wow, and I used to wonder कि वो पुराने दिन पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे. But now, when you look at the numbers that are coming in from these films that you just mentioned, I think it's a great phase to be in. I genuinely hope that this phase continues, because it's so important for the survival, for the health of not just the industry but people, those who are associated with the film industry. There are thousands of workers, as you know, who are associated with a particular film. Correct. And एक फिल्म अगर नहीं चलती तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या उस एक्टर को या उस एक्ट्रेस को नुकसान पहुंचता है. वी आर सो इजी टू टारगेट देम कि ये एक्टर फ्लॉप हो गया. वो thousands of people who are associated with every film. तो उनके पेट पे लात लगती है, उनको चोट पहुंचती है, दिल पे चोट पहुंचती है, financially चोट पहुंचती है. And I think it's a circle. Let's hope we come back to the track in the coming weeks also. Right. You were very hopeful, sitting very right here. I asked you, ki, what if Gadar, oh my God, don't do well? Yeah. You said, hope not. Yeah. And that's exactly what happened. I watched Oh My God. I'll discuss both the films with you, of course. Yes. I watched Oh My God Part 2 on Monday, 5 days before the release, with the cast and crew of the film. And Akshay, Yami, Pankaj Tripathi, Viacom is 18, Ajit Andhare. And the moment I came out in the interval, in fact, after the ending, and I told Akshay, इसको adult certificate क्यों दिया? That was going to be my question. That was my first reaction to him. I said, this film is rocket. There's no stopping this film. I said, but एक गलती है. She said, what? I said, आप एक बहुत बड़े तूफान के सामने आ रहे हैं, Gadar. And these are my words, आप एक तूफान के सामने आ रहे हैं. And he said, yeah, but we can't do anything right now because, too late. Too late, and at the same time, there's Independence Day also. So everyone was very hopeful. Yes, everyone was hopeful. I said, fine. And this film has really worked. Yeah, it has worked. Because it entertains, it enlightens
enlightens because this film is on sex education, doesn't hurt religious sentiments. At the same time, there's a message of good touch and bad touch. Right, which is It's so important for the kids to know today that these basic things are so while they're growing up, and unfortunately, the very people they want to show it to can't watch the film. correct. So that is a problem. But I hope when it comes on OTT or wherever on TV, a large section of audience watches it. The youngsters watch it and see the message that it intends conveying. As far as Gadar is concerned, I was flying to Australia, as you know. Yes. And Zee had decided that they are not going to show the film to anyone. They said कि तरन जी हम ये फिल्म नहीं दिखा रहे हैं किसी को. हमने सोचा है कि 11 तारीख को ही हम दिखाएंगे जिस दिन फिल्म रिलीज होगी. मीडिया को भी, ऑडियंस को भी, एंड हमारा प्रीमियर भी थर्सडे की रात को नहीं होगा, फ्राइडे की रात को होगा. I said okay. So when I left on 9th, I reached at 10th night. Zee was very kind enough to organize a show for me in the theatre in Melbourne. Okay. And obviously the audience was also there. हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स के लिए है, ये फिल्म सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए है, ये रिएक्शन नहीं आते ऐसी फिल्मों के. When I was watching Gadar 2 in Australia, believe me when I say this, that song मैं निकला गड्डी लेके या उड़ जा काले कामा, there were CTs and talis in the auditorium. Wow. In the second half, I'm sure you watched the film. In the second half, there's a scene where a crowd इधर तरफ से पूरा आ रहा है, इस तरफ से पूरा आ रहा है, and Sunny Deol खड़े हैं, and suddenly they start retracting. Yes. The crowd Yes. goes back, and Sunny की नजर पड़ती है hand pump पे, and someone from behind just shouted, "उखाड़ उस pump को!" In Australia. In Australia. And I just was startled because I was so engrossed in that scene, and suddenly someone is screaming, "उखाड़ उसको!" or "पीट सबको!" And the way people reacted in that scene, so that shows. So I met a lot of people after the screening, and they said, "कि तरन जी," they recognized me and they said, "कि तरन जी, हम ये फिल्म देख रहे हैं," and these are their words. कितना अच्छा लग रहा है, हम अपने परिवार सहित आए हैं, we are watching this film, we are not feeling awkward or embarrassed. Please tell the producer. There are so many Hindi films we watch. We come with our families, we come with our daughters, we come with our family, and we are so embarrassed to watch halfway through the film and what is going on screen. So please tell them that please make a film that is family oriented, and which you can watch with the families, of course. So I said definitely I'll convey. So Gadar is one of those films. Right. So the success doesn't really surprise me. Right. If you go back 20 years ago, when first part was released, even that was trashed and was a lot of people wrote off that film because उस वक्त लगान लग रही थी and people felt कि लगान आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, ये तो आउटडेटेड फिल्म है. इसमें तो अनिल शर्मा जो है वो तो मतलब ठीक है. आज तो when I was in Australia, I was getting calls, I was getting messages कि ये तो outdated film है, because people are watching it here and they are calling and they are sending messages, outdated film, अनिल शर्मा क्या बना रहा है, गदर 2 को ruin कर दिया उसने, all the negative. And these people, of course, it's a very tiny section of the industry people. There's a disconnect, They're totally disconnected. They're totally disconnected. And then there were some critics who wrote off the film. ठीक है, मैं मानता हूँ आपको पिक्चर पसंद नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, ऐसी कई बार होता है, आपको फिल्म पसंद नहीं आती, इनको फिल्म नहीं आती, उनको नहीं आती, मुझे बहुत अच्छी लगती है. हाँ, ओपिनियंस कैन वेरी, बट द थिंग इज कि आप जब उसकी धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, मजाक बनाने लग जाते हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आपको फिल्म पसंद नहीं आई, नो प्रॉब्लम, लिखिए, नेगेटिव है, क्रिटिसाइज करिए, इट्स योर जॉब टू क्रिटिसाइज अ फिल्म और लाइक अ फिल्म और व्हाटएवर. पर उसका मजाक बनाना, उस पे बफूनरी करना, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. पर्सनल अटैक नहीं होना, पर्सनल अटैक मत करिए, डोंट हिट बिलो द बेल्ट. एंड क्या अहमियत रही आपकी 2 स्टार की, कुछ वो कौन सी जरा हटके जरा बचके की, क्या अहमियत रही आपकी गदर की 1.5-2 स्टार की, क्या अहमियत रही अभी आपकी ड्रीम गर्ल की 1.5-2 स्टार की. दर्शकों ने आपको करारा जवाब दिया है. जनता जनार्दन इज द फाइनल वर्डिक्ट. वी नीड टू गो डाउन टू देम. सर आंखों पर उनका जो वर्डिक्ट है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है. आपके मेरे इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ऐसा है, वो वैसा है, आउटडेटेड डायरेक्टर है, ये एक्टर मल्टीप्लेक्स में नहीं चलता, ये तो इसको कौन देखेगा 20 साल बाद.
मेरा ये मानना है, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, क्योंकि मैं हमेशा इस बात में यकीन रखता हूं, एक शुक्रवार काफी है उसे वापस उस तख्त पे बिठाने के लिए, उस सिंहासन पे बिठाने के लिए। तो आप अगर किसी को कहते हैं ये आउटडेटेड है, ये मसाला फिल्में कौन देखता है, ये तो 1970 की फिल्म गलती से 2023 में आ गई है, मत कहिए, क्योंकि ये जब वक्त बदलता है ना, तो वक्त के साथ साथ आपकी राय भी बदलेगी। और यूं बदलती है आपकी राय कि हाँ, गदर 2 अब कितनी अच्छी फिल्म थी। कुछ देर पहले तो आप उसको गाली दे रहे थे, कुछ देर पहले तो आप उसकी टिप्पणी कर रहे थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और आज तो so that's the reason why I think the box office speaks louder than words. Right. Audience is ultimate king. Audience is the ultimate king. और आज भी देखिए क्या कलेक्शन थे। मतलब आज 18वें दिन पे ये फिल्म आज भी सिंगल स्क्रीन में, एंड लुक एट द रिएक्शंस, जैसे ही मैं फिल्म देख के निकला, आई हैड पुट माय रिव्यू, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ही कॉल्ड मी अप इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही सेड के तरन जी, मेरे यहाँ तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, अभी आपको देखना क्या जिस तरह से लोग नाच रहे हैं थिएटर, नाच रहे हैं, माय गॉड, जिस तरह से सीटियां बज रही, तालियां बज रही है, हमको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, प्लीज खाली करिए, दूसरा शो शुरू होने वाला है। तो दैट्स द रिएक्शन, दे आर नॉट रेडी टू लीव। जितने लोग थिएटर के अंदर थे, शायद उससे उतने ज्यादा थिएटर के बाहर थे। दैट इज द पावर ऑफ अ गुड फिल्म। आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए, और हमारे यहाँ, सॉरी टू से दिस, हमारे यहाँ क्रिटिक्स लेबल दे देते हैं, ये क्रिंज सिनेमा है, ये कैंडी फ्लॉस। करण जौहर की फिल्म आई कैंडी फ्लॉस है, अनिल शर्मा की फिल्म आई है क्रिंज फेस्ट है। ये तो गदर भी अगर आई है, इनमें तो नेपोटिज्म कितना है। हाँ, नेपोटिज्म है, पर दर्शकों को एक अच्छी कहानी देखनी है। मानता हूँ सनी जी धर्म जी के बेटे हैं, मानता हूँ उत्कर्ष शर्मा अनिल शर्मा के बेटे हैं, मानता हूँ अनिल शर्मा भी प्रोड्यूसर केसी शर्मा के बेटे हैं, वो भी नेपोटिज्म है। बट जब दर्शक फिल्म देखना चाहते हैं तो एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, एक अच्छी कथा देखना चाहते हैं, पटकथा देखना चाहते हैं, और वही उनको इस फिल्म में मिला है। तो आपके जो लेबल्स हैं ना, ये क्रिंज, ये कैंडी फ्लॉस और ये नेपोटिज्म और ये सब, माफ करिए, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये सारे लेबल्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इनको हटाइए। Right, absolutely true. Talking about these actors specifically, Sunny Deol to start with, where does this take him back? Like, he has not worked in a long time. His film kept coming, but where now he's on top. Yeah, absolutely. See, Sunny Deol was a huge star in the 80s and 90s also, of course. But over a period of time, perhaps when the films don't do the kind of business that you expect them to do, so आप ये सोचते हैं कि इसका दौर अब नहीं रहा। और ये हर एक्टर के साथ होता है। अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, शाहरुख खान के साथ हुआ, पठान के साथ वापसी हुई, सलमान खान ने वांटेड के साथ वापसी की थी, और अब टाइगर 3 के साथ फिर वापसी होगी शायद, फिंगर्स क्रॉस्ड। सनी देओल ने इतनी बड़ी वापसी गदर 2 में, और देखिए कितना खूबसूरत दौर है। आज हम बात करते हैं सनी देओल की वापसी की। मैं कहता हूं ये वापसी का दौर कई फिल्मों से शुरू हुआ है। इससे पहले शाहरुख खान की वापसी हुई थी, बराबर है, इसके बाद सनी देओल की वापसी हुई, अक्षय कुमार की वापसी हुई, क्योंकि उन्होंने कतार में 4-5 फ्लॉप्स दिए थे, और अब आयुष्मान खुराना की वापसी हुई है, क्योंकि उनके भी बेचारे 4-5 फिल्में नहीं चली थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक फ्राइडे ही काफी है किसी फिल्म को या किसी एक्टर को वापस उस रेस में लेके आने के लिए। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, वी नीड एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। एंड आज जब सनी देओल वापस आए हैं, उन्होंने चौका नहीं मारा, उन्होंने सीधा छक्का मारा और बाउंड्री के बाहर बॉल फेंक दिया है। तो सोचिए, आज अनिल शर्मा, सनी देओल, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर दीज पीपल who ruled at a point of time to come back and stay on the crease and perhaps deliver more jubilees and successful films. Is it a Sunny Deol film? Is it a Utkarsh Sharma film? Is it I would say it's an out and out Sunny Deol film. It's an out and out Sunny. Out and out Sunny Deol film. ठीक है, उत्कर्ष का एक अच्छा बहुत रोल है, मैं डिनाई नहीं करता, उनका भी एक बहुत ही पैरेलल ट्रैक है जो चल रहा है फिल्म में, बट सनी देओल इज गदर, पावर इज सनी देओल। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब वो पंप भी उखाड़ते हैं तो लोग यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये 2.5 किलो का हाथ है, वो ही उठा सकता है। कोई और उठाएगा वो पंप, उखाड़ेगा वो पंप, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई भी एक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये सनी देओल कर सकते हैं। उनकी पर्सोना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी दहाड़,
you know, क्या commanding है. Commanding है. Hi, this is Taran Adarsh and watch this entire interview only on Bollywood Hungama with the best Rohit Khilnani.